Hare Krishna, Jai Jagannath. So finally, the last part of the series of discussion regarding the OPSC Odisha Civil Service Examination Prelims GS Paper 1 discussion. So already I mean 95 questions like last 15 days properly discussion karuchu. So every question like detailed analysis so like correct option correct answer find out so अन्य जो options रही ता विषय भी ठीक है हमें information gather करचु so that it will be helpful for the future exams. Okay, so प्रति पार्ट रे मु पांचटा लेखा क्वेश्चन डिस्कस करछि तो जे माने बेसिकली न्यू कमर्स लाइक ए वर्ष फर्स्ट टाइम पे एग्जाम देबे ताको में बहुत हेल्पफुल होबो. So please go through the all the parts for detailed analysis. So एटा हमर लास्ट पार्ट रहइबो तापरे मु प्लान करछि कि like quality Indian quality Lakshmikant and your जो तुम जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ता ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आछे तो से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करिया पे हला. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 96, which is the highest allocation ministry in budget 2021-22. so currently तो हमारा बजट ऑलरेडी 22-23 आ जाई छी. so basically every year जे कोन ईयर रे जेडा पचारे तो आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओनली. so because मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे अधिक फंडिंग मिले. ओके, so according to article 112 of the Indian Constitution, the union budget of a year is referred to as the annual financial statement. तो तुम्हें मन रखो कि budget word is not mentioned in the constitution. तो ता बदले को word अछि annual financial statement. को article अछि article 112. हला तुम्हें जानते हो article 110 is money bill, 117 is the financial bill and 112 is the annual financial statement or budget, but budget word is not mentioned. एटा भी क्वेश्चन पचारि पारे. So it is a statement of the estimated receipts and expenditure. तो budget माने कोन केते पैसा आसीबो केते हम खर्च करिवो हला. तो यदि अधिक खर्च करछु त हमर बजट डेफिसिट रहउची और यू कैन करंट अकाउंट डेफिसिट जोडा भी को होची ना या फिस्कल डेफिसिट नॉट करंट अकाउंट डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट. सो से में सेटा कोडी हमें बोरिंग करिवो इंटरनल बोरिंग एक्सटर्नल बोरिंग. सो ऑल द थिंग्स आर देयर. एटा इकोनॉमी रे तमे बोलसे पढिबो. ओके, वी कैन हैव अनदर सेशन फॉर इकोनॉमी एज वेल. So it is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government in a financial year. So financial year तमे जानथिबो स्टार्ट हुए तुम्हारा 1 अप्रैल रु एंड सॉरी 31 मार्च रे हला. तो प्रीवियसली एक्चुअली जो बजट सेशन होतला सेटा एक्चुअली 1 ऑफ मार्च होतला, बट फ्रॉम लाइक लास्ट 2-3 इयर्स मोदी गवर्नमेंट के टाइम रे एटा 1 ऑफ फेब्रुअरी रे होची. ओके, सो इन पार्लियामेंट द बजट गोस थ्रू 6 स्टेजेस. तो बजट रे तीनटा 6टा स्टेजेस होची. फर्स्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. तुम जानते हो बजट प्रेजेंटेशन के करंती फाइनेंस मिनिस्टर करंती. करंटली श्रीमती निर्मला सीतारमण is the finance minister. So first she presents the budget, then general discussion happens, then scrutiny by the departmental committee. तुम जानती हो departmental committees रही छी 24 departmental committees I think. Okay, तो committees ऊपर भी मोटे वीडियोस बने भी different committees सेथरे के members रहंती किए ता हेड करंती ताको टर्म केते एंड ऑल. Then after the presentation of budget there will be general discussion, then ताको properly scrutiny करिवे departmental committees. Then there will be voting on demand for grants. So voting on demands for grants will be there. Then finally passing appropriation bill, passing of finance bill. तो बिना appropriation bill pass है तुम्हें like consolidated fund of India जो अच्छी से तो किसी money withdraw करी परिवो नहीं. So both appropriation bill and finance bill, these are types of money bill. Okay, and money bill is a type of financial bill, you can say as well. Okay, financial, but all financial bills are not money bill. Okay, so financial bill money bill विषय रे भी हमें पूरा डिस्कशन करथिलु in some video, last video or last video, you can see that. Now moving to this is the ministry wise allocations in the this current budget 22-23. so you can see here like border sorry सामने रो border क्रम में जाइछु. ministry of defense तुम देखथुओ 5,25,000 crore. so crore रे अछि. so 5,25,000 crore highest allocation है कागो ministry of defense को. ता तले रछि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि तमरा पीडीएस जो प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना अन्न योजना जो फूड सिक्योरिटी वगैरह अछि सेटा सब इधर आछि. कंज्यूमर अफेयर्स सेकंड रे ता तले आछि रोड ट्रांसपोर्ट रोड मिनिस्ट्री जो नितिन गडकरी लीड करछन. इट इज अराउंड एटा 2 लाख कोटी पाखा की अछि हैना, अराउंड 2 लाख करोड़. एंड दिस इज हाईएस्ट डिफेंस अराउंड 5.25 लाख करोड़ हैला. सो डिफेंस तळे अछि कंज्यूमर अफेयर्स ता तळे अछि रोड ट्रांसपोर्ट ता तळे वाला होम अफेयर्स मिनिस्ट्री. कोन डेटा को रिपीट हे ना कोन
ओके दैट के मिस्टेक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जेटा हवा कथा मे भी गोटे कोड छाड़ दी छिला ओके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जेटी अछि एटा होम अफेयर्स होबनी लेट्स एडिट इट ओके तो रोड ट्रांसपोर्ट पर तुमरे होम अफेयर्स अछि तापरे अछि रेलवे ओके ओके देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जोड़ा कि तमर केते अछि 1,38,000 crore rupees मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1,32,000 crore rupees देन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस तुमे प्रथम दु तीनटा मन रखि पारो डिफरेंट तार कंज्यूमर अफेयर्स देन रोड ट्रांसपोर्ट देन होम अफेयर्स ओके मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 97 so it is asking central government has unveiled a new series of consumer price index for industrial workers with days as the base year तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अछि तारो बहुत प्रकार बेसिकली अछि पार्ट्स सब पार्ट्स यू कैन से तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबरर्स एवला अछि हला सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट releases the new series of consumer price index for industrial workers with base year 2016 जोरा के आंसर हो तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर पे बेस ईयर कोन कर देछि 2016 ता पूर्व करथा 2001 सो 2001 को चेंज करके बेस ईयर कोन कर देछि 2016 तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोन इट इज मेनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग dearness allowance paid to central and state government employees and workers in the industrial sectors besides measuring inflation in retail price तमे जानथिबो जो तेंदुलकर कमिटी तमरो सीपीआई आईडब्ल्यू को बेस करके तमरो कोन अर्बन एरिया पे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करछि तो बेसिकली यही हिसाब रे इन्फ्लेशन टारगेट हुए 2016 को एबे बेस कर आइछि सो या हिसाब रे लाइक इन्फ्लेशन टारगेट भी मेजर करा जाय फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस वगैरह भी करा जाय सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द लेबर ब्यूरो सो लेबर ब्यूरो को मेंटेन करे एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट so ministry of labor and employment labor bureau kon korchi cpi industrial workers को compile korchi और maintain korchi now consumer price index bisrati janiba so consumer price index it measures price changes from the perspective of retail buyer perspective को eta perspective को measure korchi released by the national statistics office hala जोटा कि mospi under रहउची mospi release korchi right the cpi calculates the difference in the price of commodities and services the difference in the price of commodities and services such as food medical care education electronics etc which indian consumers buy for use the cpi has several subgroups including food and beverages fuel and light housing and clothing bedding and footwear so ताजु basically कोन कोची the cpi calculates the price difference कोथरे commodity food medical care education electronics now तार several groups रहछि गोटे हला फूड बेवरेज पय रहला फ्यूल एंड लाइट पय रहला हाउसिंग एंड क्लोथिंग पय बेडिंग एंड फुटवेयर पय सो एट प्रेजेंट इंडिया हैज 5 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस केतरा अछि सीपीआई रो केतरा अछि 5टा अछि 5 प्रकार सीपीआई 3 ऑफ व्हिच आर वर्किंग क्लास स्पेसिफिक जोथरो के तीनटा हला वर्किंग क्लास स्पेसिफिक हला तो फाइनल देखलो सीपीआई को रिलीज के करे एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जोडा कि मस्पेंडर रहछि बाकी जो इंडस्ट्रियल वर्कर आ जो एग्रीकल्चर रहला कोन अच्छा जो वर्क क्लास रहला सेतरो गोटे रहला इंडस्ट्रियल वर्कर जहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और लेबर ब्यूरो ताको कंपाइल करे एग्रीकल्चर लेबर रहला और रूरल लेबर रहला नाउ दीस थ्री इंडेक्सेस आर कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो बोस्ट तो तीनटा को इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबरर एंड रूरल लेबर सब थरे लेबर इंक्लूड होछि से हिसाब मन दो लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ताको रिलीज करे नाउ सीपीआई ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबरर आर यूज्ड टू फिक्स मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स and rural unskilled employees. The Labor Bureau is also expected to bring out the new series of CPI, which currently has the base year of 1986-87. So 1986-87 अच्छी base year for CPI agricultural labor rural labor. सिपे तांकर जो waste है काफी कम तुम देखियो मिले. बाकी 2016 किंतु कार base year ही होला. Industrial workers मान कर. Okay. So you can see that Labor Bureau ऐको करूची. बाकी जो आउ जो दीटा होला CPI urban and CPI rural. These two indexes are compiled by which one? National Statistical Office. यदि तुम नॉर्मल पचार दो कि सीपीआई को क्या रिलीज करे यू कैन राइट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हैला बाकी स्पेसिफिकली यदि सीपीआई अर्बन सीपीआई रूरल पचारसी तो दैट इज आल्सो एनएसओ बाकी यदि तुम डायरेक्टली पचार सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर सीपीआई रूरल लेबरर ताने तुम कहबो लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बाकी जो सीपीआई अर्बन सीपीआई रूरल को कंबाइन करके क्या रिलीज करे दैट इज आल्सो ये एनएसओ ओनली मोस्टली
So the combined rise in retail prices captured by CPI combined भी गोटे अछि. So a committee set up by the National Statistical Commission in 2005 under the recommendation of Dr. C. Rangarajan Commission has suggested that CPI rural and CPI urban could be substituted for the CPI agricultural labor, rural labor, and CPI AW respectively. Coming to question number 98. The contribution of the primary sector to GDP of India is what? Increase kochi, same kochi, decrease kochi, or sometimes increasing, sometimes decreasing. So answer is D. So growth of agricultural sector has been fluctuating. It increased from minus 0.2% in 2014-15 to 6.3% 2016-17. So it increased कोर्स देखिए तो मैं 14, 15, 16, 17 पर्यंत 2 वर्ष increase कला, मैं decrease करेगा to 2.8%. So basically sometimes at times increasing, at times decreasing. Gross fixed capital formation in agriculture decreased from 17.7% of GVA to 15.2% of GVA in 2017-18. तो GVA तो मैं जानते हो तीनटा सेक्टर में लिखा है हला, that is primary sector जोड़ा कि mainly तमर agriculture रोची and mining and quarrying रोची, then your secondary sector mainly तमर manufacturing industries रोची, then your service sector, tertiary sector टा जो रोची तमर बाकी services. Okay, now moving to, so you can see here. This is a like तुम जानती हो GDP हमारा mainly दुई प्रकार ये calculate करे, इसे पे तुम्हारा कौन GDP deflator भी यूज़ है, गोटे है constant जितनी base price से गोटे यूज़ है, और current price से यूज़ है, basically हम calculate करो. So you can see here service sector के तरह ची constant price अनुसार 54.27% है ला contribution from service sector. Then तोय रोची second रोची around 30%, 29% you can remember. Industry जो तुम्हारा कहाँ secondary sector रोची जो थे manufacturing, electricity, gas, water वगैरह, construction इस वास्ते. Next comes the agriculture for and mining and quarrying जोड़ा कि तुम्हारा agriculture sector आस्ती. Okay. Now service sector बाकी public administration, defense, financial, real estate, trade, hotel वगैरह इस वास्ते. And you can see here last 10 years 2010 से 2020 भीतर है केमती different sector हला ये हला तुम्हारा primary जो कौन agriculture sector, industry sector and your service sector. You can see agriculture sector 17.03 like कमी जाइए पुणी finally 18.3 कमुची बढ़ुची you can see here, and your industry sector you can see 30.73 कमी आसी धीरे धीरे कोडी कमुची कोडी बढ़िची mainly ये कमी कर तुम देखा जाओ तार share टाकू, and even here you can see which one service sector जोड़ा कि increase कर करी जाऊची. Okay, but किसी भी fix नहीं, you can see last 10 years तुम पचर कितने बढ़ुची कितने कमुची, so you can say that. Okay, so this is the answer for the question number 98. Question 99, it has asked Robin Hood effect related to which of the following. So answer will be what? Income redistribution. So the Robin Hood effect is a phenomena most commonly used in discussions of income inequality. Robin Hood तुम्हें जानते हो गोटे फिल्मी कैरेक्टर जे कि बेसिकली कौन करे धनी मान को टंका पैसा आनी गरीब लोक मित्र बांटी दिए हैला. तो जो पुराना हिंदी मूवीज you can see also. So that is the thing. So in Robin Hood effect, income is redistributed so that income inequality is reduced. For example, a government that collects higher taxes from the rich and lower or non taxes from the poor and then uses the tax revenue to provide services to the poor creates a Robin Hood effect. Okay. Now coming to question number 100. Question number 100. Out of the four concepts of money supply in India, M1, M2, M3, M4, the post office savings are included in which one? So answer is D, M2 and M4. Let's see money supply, the total stock of money. Total stock of money in circulation among the public at a particular point of time is called money supply. So money supply क्या कहूँ माने public मान को भीतर जो money टा total stock of money in circulation among the public at a particular point of time हैला तब कहूँ money supply. It needs to be noted that total stock of money is different from the total supply of money. So total stock is different, total supply is different. So supply of money is only that part of total stock of money which is held by the public at a particular point of time. तो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रे पब्लिक जति की टंका हेल्ड करूची माने ताको पाखरे अछि कैश रे हैला. सो इट लिखा है सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व्स करेंसी, प्रिंटेड नोट्स, मनी इन द डिपॉजिट अकाउंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट्स. ओके, ताको होउची कोन सर्कुलेटिंग मनी. नाउ लेट्स सी बाकी जेंति तुम कहि पारो मनी मल्टीप्लाई का कहजे बेसिकली हम गोटे डिपॉजिट को बैंक रे बाकी से कोन करला हम गोटे बहुत वर्ष पय जति डिपॉजिट करू से कोन ताको लोन दे देबो. तो सही हिसाब रे कोन मनी टा बढ़ी होउची हैला, स्टॉक मनी बढ़ुची किंतु सर्कुलेशन है कमुची. सॉरी भूल कर दिले बोले. Okay, it is connected. Okay, I think it is connected. So RBI
RBI कौन करे पब्लिश करे फिगर्स फॉर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4 तो M1 M2 M3 M4 कोन हम देखि दबा हैला तो M1 इज करंट CU plus DD हैला माने कैश हम जति हेल्ड करछु लिखा दो C is currency that is not notes plus coins held by the public and DD is the net demand deposits held by the commercial banks तो commercial banks रे जति की लाइक रहउची तोमा डिमांड डिपॉजिट आउ जति की करेंसी हेल्ड करछु के पब्लिक ताकू कहौ छै M1 and M2 is M1 plus saving deposits with post office saving banks so you can see here post office को commercial bank to different rate धरा होछि तो M2 रे तमन आछि कोन जो करेंसी हम जति हेल्ड कले M1 आउ डिमांड डिपॉजिट जो सेटा भी M1 रे अछि तो ता सहित जो सेविंग्स रहला कोद्रे पोस्ट ऑफिस ताको M2 कहला हला M3 कोन हला M1 जति करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट और नेट टाइम डिपॉजिट जो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट कहै ताको एठी ऐड कर देला M3 रे हला आउ M4 कोन हला M3 दैट इज जो M1 थिला प्लस नेट टाइम डिपॉजिट प्लस जो सेविंग डिपॉजिट थिला पोस्ट ऑफिस सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट बोथ आसी गला कोन M4 रे हला एथे किंतु नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एटू एक्सक्लूड होछि so the word net implies that only deposits of the public held by the banks okay so the word net को लिखा छै जो net time deposit लिखा छै so implies that only deposits of the public held by the banks are to be included in money supply the interbank deposits which a commercial bank holds in other commercial banks are not to be regarded as part of money supply so M1 M2 are known as narrow money and M3 M4 are known as broad money so these debts are in decreasing order of liquidity सबुठ अधिक लिक्विड कोड हवा M1 then M2 then M3 then M4 like that so M1 is the most liquid and easiest for transactions whereas M4 is least liquid because it is a term deposit वगैरह आ जाउची है तो M1 is the most liquid and M4 the least liquid and M3 is most commonly used measure of money supply है because एथरे तमरो commercial bank रे सब आसी गला M1 and M2 sorry M1 plus your net time deposit and all so it is saying M3 is the most commonly used measure of money supply. It is also known as aggregate monetary resources. So this is the thing. So this is the Telegram group you can see here. OPSC exam revise. You can join the Telegram group for the PDF and all. Thank you so much. We'll stop here. And yes, don't forget to. I can show you the Telegram group as well. This is the Telegram group. OPSC exam revise with Suraj. You can join for the PDFs and all. And please mention your comments. Feedback everything in the Telegram or in the YouTube channel also okay so we'll stop here recording stop